Hello, in this part of the video, we will study Act 1, Scene 2. So here Miranda is asking her father, would I ever might see that man again? So Miranda is asking Prospero कि पापा क्या हम कभी भी Gonzalo मतलब the man who saved us उनको देख पाएंगे? Prospero instead of answering Miranda, he gets up. Prospero बिना जवाब दिए मिरांडा को खड़े जाते हैं, बोलते now I rise. Sit still and hear the last of our sea sorrow. So Prospero is saying to his daughter, okay, now this is the last part of my story about the sea. Here in this island we arrived. So Prospero is not answering anything directly to Miranda. So he says कि सुनो बेटी ये हमारे कहानी का आखिरी हिस्सा here in these island we arrived. So Prospero is saying कि हम लोग इस island में जब arrive हुए थे, I have been your schoolmaster and you have more profit from it than other princes who have more vainer hours and tutors not so careful. So Prospero is saying to Miranda that I came here on this island and I have become your teacher, your tutor, your schoolmaster, your caretaker, your trainer, as a result of which you have got undiluted training from me compared to other prince and princess who live in the palace. So they have lots of vainer hours. Matlab they waste lots of time. Their focus is not concentrated, and the tutors are not as careful as a father or a mother can be. So Prospero is reminding Miranda that you should be grateful to me that I have been training you, I have been educating you, not a tutor who cannot be as careful as a father or a mother, or you cannot be like those prince who live in the palace जहाँ उनको डाइवर्ट करने के लिए हजारों चीजें होती होंगी उस जमाने में भी. So प्रॉस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा को बोल रहा है कि बेटी आई टॉट यू, हम तुमको पढ़ाए, और ये उनसे अच्छा था जो पैलेस में रह के पढ़ते हैं, जो कासल में रह के पढ़ते हैं, क्योंकि जो पैलेस और कासल में रह के पढ़ते हैं उनको उतना अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिलता जितना प्रॉस्पेरो अपनी बेटी को ट्रेन कर पाया है. Miranda is saying, Heaven thanks you for that. So Miranda is saying, God, I'm so glad that my father taught me. Now I pray, sir, the question is beating in my mind your reason for raising the storm. So Prospero is not answering any question that Miranda is asking. He has his own narrative. He has his own flow of information that he has to pass on to the child, Miranda. So Miranda is saying, Papa, I'm so glad that you have been my tutor. आपने मुझे training दिया, better than princes, better than other people who live in the palace. I got undiluted information. I got concentrated focus. ठीक है. But the question is still beating in my mind. Why did you raise the storm? बात तो सब आपका सही है कि हम खुश किस्मत है और आप हमको ट्रेनिंग दिए, ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कि आपने स्ट्रॉम क्यों रेस किया. सो मिरांडा इज आस्किंग द बेसिक क्वेश्चन कि स्ट्रॉम आपने रेस किया क्यों, माने व्हाट इज द रीजन फॉर रेजिंग द स्ट्रॉम. नो दस फार प्रॉस्पेरो इज सेइंग कि बेटी तुम इतना ही जान कि बाय एक्सीडेंट मोर स्ट्रेंज कि एक बहुत अजीबोगरीब एक्सीडेंट हुआ, एंड द बाउंटीफुल फॉर्चून माने काइंड फॉर्चून, परोपकारी, बेनावोलेंट, मर्सीफुल डेस्टिनी, नाउ माय डियर लेडी. सो ही इज सेइंग कि एक बहुत अजीबोगरीब एक्सीडेंट हुआ बिकॉज ऑफ विच fortune has been very kind and fortune has brought all the enemies to the shore. ने किस्मत ने मेरे सारे दुश्मनों को, प्रॉस्पेरो के सारे दुश्मनों को किनारे पे, मैंने जहां प्रॉस्पेरो रहता है बरमूडा में ला दिया है. एंड by my prescience means by my magical knowledge I find my zenith that depends upon a most auspicious star. ये बोल रहा है कि हमको अभी अपने मैजिक से दिखा है कि मेरा जो स्टार है ना, किस्मत का तारा, वो अभी टॉप मोस्ट पोर्शन पे है, और अगर अभी मैंने उसका फायदा उठा लिया सो हमेशा हमेशा के लिए आई विल बी बेनिफिशियल. एंड इफ आई डू नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन राइट नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ आई हैव टू सफर. सो हियर ही सेइंग कि बाय माय प्री साइंस मींस बाय माय मैजिकल नॉलेज आई फाइंड द जेनिथ, मतलब आई फाइंड माय luck has gone to the zenith. Zenith मतलब होता है topmost portion, the most auspicious star, those influence I quote not.
सेइंग कि अभी किस्मत मेरे साथ है, मतलब the luck is favoring me. So right now I will take the advantage of this luck rather than omit it. So kismat jab abhi mere saath hai, kismat is trying to support me, luck is trying to support me, so I will not try to omit it. My fortune will ever droop. So he's saying कि अगर अभी मैंने किस्मत जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे मतलब एनिमीज मेरे पास आ गए हैं, अभी मेरे पास कैलिबन है, एरियल है, अभी मेरे पास मैजिकल पावर है, when everything is suitable, if in this kind of suitable situation, if I don't take advantage and catch my enemy, then this chance will never come. ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा. My fortune forever will droop. मेरा किस्मत हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा, because luck will never give me this chance again, that my enemies will again come. After 12 years they are passing from this island, so it's a once in a lifetime moment. So he says कि अब हम ये risk नहीं लेंगे, I can't wait for the next time. So fortune will forever sleep if I don't take advantage and try to catch my enemy and take my revenge. Yeah, so Miranda was supposed to ask more questions. He was saying, Papa, ye, Papa, wo, Papa, ye. So Prospero raised his magical wand and Miranda goes to sleep. So Prospero is saying, here, cease, man, stop more questions. And then he raised his wand. And because of the effect of this wand, Miranda goes to sleep. So Prospero is saying, दो art, मैंने you are inclined to sleep. पापा बेटी को बोल रहे, बेटी तुमको देख के लग रहा तुम तो सोने वाली हो. It is a good dullness and give it away. Prospero is saying to his daughter कि बेटी ये अच्छा dullness है, मतलब जब तुम dull feel कर रही हो, नींद आ रहा है, ये डलनेस, ये स्लीप बहुत अच्छा है, गिव इट अवे, मतलब एक्सेप्ट इट. ये जो नींद आ रहा है बेटी, उसको तुम एक्सेप्ट कर लो, मान लो और सो जाओ. आई नो दे कैन नॉट चूज. मिरांडा सो गई तो पापा बोल रहे, आई नो बिकॉज ऑफ दिस मैजिकल इफेक्ट तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है. व्हेन दिस स्लीप मैजिकल स्लीप कम्स, यू हैव टू स्लीप. मिरांडा फॉल्स asleep. बेटी सो गई. And Prospero puts on his magical garment. Prospero अपना वो मैजिकल ड्रेस पहन लेते. He puts on his magical dress and then he calls his invisible servant. Come away servant, come, I'm ready now. तो वो अब अपने इनविजिबल सर्वेंट एरियल को बुलाता है. अप्रोच एरियल, कम कम एरियल कम. सो अब एरियल कम्स. एंटर एरियल. एरियल इज अ सर्वेंट ऑफ प्रॉस्पेरो. So Ariel says, Hail master means welcome master, welcome. Grave sir, well means serious sir, knowledgeable sir. I come to answer your best pleasure means whenever you are in a good mood, I will answer you. To fly, to swim, to dive, to ride into the Kul's cloud. So he says, I can swim for you, I can dive into the fire for you, I can go into the clouds for you, and can bid thy strong task. So he's saying कि आप कोई भी हुक्म दीजिए, कोई भी आज्ञा दीजिए, जो भी स्ट्रॉन्ग काम हो, हम सब कुछ करेंगे. एरियल विथ ऑल हिज क्वालिटीज. सो एरियल सेज कि हम स्विम कर सकते हैं, फायर में राइड कर सकते हैं, क्लाउड में जा सकते हैं. एनी स्ट्रॉन्ग बिडिंग माने ऑर्डर, यू टेल मी, आई विल फॉलो इट. So Ariel with all his qualities is ready to follow the command of his master Prospero. So Ariel हर वो काम करने के लिए तैयार है जो Prospero will say. Prospero, though has spirit, perform to the points I bid you. So Prospero is asking Ariel कि Ariel servant, did you perform everything that I told you? मैंने जैसे जैसे मैंने तुम्हें कहा था, क्या तुमने वो किया? Ariel, to every article. Article here means every point. एरियल इज सेइंग, हाँ सर, आपने जो जो ऑर्डर दिया था मैंने एक एक पॉइंट को कंप्लीट कर दिया. आई बोर्डेड द किंग शिप. एरियल इज सेइंग कि कभी मैं किंग के शिप में चढ़ा, कभी माउथ में चला गया, बीक मतलब शिप के बीक में, कभी पेट में शिप के, स्टमक में, वेस्ट मीन स्टमक, कभी डेक में ऊपर में, कभी केबिन में. आई फ्लेम्ड अमेजमेंट मैंने फायर. सो ही सेज कि कभी मैंने आग लगाया शिप के माउथ में, कभी स्टमक में, कभी केबिन में, कभी डेक में, और हर जगह आग लगाते रहा. एंड बर्न इन मेनी प्लेसेस. So he's saying कि I raise storm at various places in the ship. Sometime I raise storm in the deck. Sometime I raise fire वाला storm. आग, तूफान में एक आग लग जाता because of gunpowder. So he raised fire sometime in cabin. He raised fire sometime in different places, like in deck, like in cabin. So he says, I flamed amazement. मतलब मैंने ऐसा आग लगाया था कि लोग चौंक जा रहे थे. So Ariel is very mischievous.
He can raise storm, he can create fire. So he has created fire not in one place of the ship, but sometime in deck, sometime in the cabin of the ship, sometime on the mouth of the ship, everywhere. Sometime I divided the fire in many places. कभी फायर लगा टॉप मोस्ट में, मतलब शिप के जो सबसे ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं, कभी यार्ड में, कभी बो स्ट्रिंग में, जो कपड़ा का स्ट्रिंग होता है जिससे शिप को कंट्रोल किया जाता है. आउट फ्लेम डिस्टिंक्टली, कभी सेपरेटली आग लगा, कभी सब आग को मिला के आग लगा. So this is how Ariel raised the storm. So Ariel is saying कि I raise the thunder and lightning, I created fire. कभी मैंने लोगों को flamed, उन्हें आग लगाया and make people amazed at it. Sometime मैंने आग लगाया in the topmost portion of the ship. कभी यार्ड में, कभी bow string, मैंने जो कपड़ा का स्ट्रिंग होता है मास्ट में, सेल में, अलग अलग जगह आग लगाया. Sometime and sometime I made them join, मतलब आग को अलग अलग जगह पहले लगाया, फिर सब आग को इकट्ठा कर दिया. Job's lightning, the precursors and the thunderclap, more momentary and outrunning were not. So he's saying Job is a god of thunder and lightning, Jupiter. Job is a short form of Jupiter. So Jupiter is a god of thunder and lightning, is a god of sky. So Job's thunder lightning is very strong. It is a precursor of the thunderclap. The lightning is seen before the sound is heard. So Job brings thunder and lightning, it brings thunderclap and a thunder lightning. It is very momentary, बहुत जल्दी होता है. Outside, outrunning, माने आँख से एक सेकंड के लिए thunder lightning दिखता है, फिर गायब हो जाता है. So Job's thunder lightning is a precursor, मतलब is a informer के एक आवाज होने वाला है. So कभी लाइट दिखता है, थंडर लाइटनिंग का लाइट, आसमान में बिजली दिखता है, उसके बाद थंडर क्लैप आवाज होता है. इट इज वेरी मोमेंटरी एंड साइट आउट रनिंग, मैंने आंखों से ओझल हो जाता है. Ariel is trying to say that my thunder and lightning were more powerful than Job's thunder and lightning. My thunderclap were more noisy than Job's thunder and lightning. My thunder and lightning, Ariel's thunder and lightning, was more powerful, more momentary, more fast than Job's thunder and lightning. Hereby, Prospero is indirectly trying to equate himself with God. Job was a Greek god, Roman god, so he could raise thunder and lightning. He could do dreadful, horrible thunderclap. मतलब जो थंडर क्लैप मतलब जो ठंडा का आवाज होता है, और लाइटनिंग मैंने बिजली का लाइट और बिजली का आवाज, वो बहुत मोमेंट्री होता है, आंखों से साइड से आउट रन हो जाता है, ओझल हो जाता है. एरियल महान है जोब से भी. एरियल का थंडर लाइटनिंग जोब से भी तेज होता है. एरियल का जो थंडर लाइटनिंग में जो थंडर क्लैप साउंड होता है, वो जोब के थंडर क्लैप से भी ज्यादा होता है. जोब के थंडर लाइटनिंग बहुत जल्दी आंखों से ओझल हो जाते हैं, एरियल का थंडर लाइटनिंग उससे भी तेज. सो एरियल इज मोर पावरफुल देन जोब. Indirectly, Prospero is more powerful than Job. The fire and cracks of sulfur roaring, the most mighty Neptune seems to besiege and bold his tremble and his trident shake. Now there is another god of sea called Neptune. So ये भगवान नेपच्यून भगवान के पास एक त्रिशूल होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइडेंट, TRIDEN. So the sea was of sulphurous roaring, मतलब समुंदर में पूरा आग लग गया था. And it seems to besiege and make his bold waves tremble. मतलब थंडर एंड लाइटनिंग जो मेरा इतना पावरफुल था कि ऐसा लग रहा था कि आई बिसीज, मैंने कॉट द वेव्स, मैंने वेव्स को मैंने पकड़ लिया, जैसे चाह रहा हिला रहे. और ऐसा लग रहा था कि नेपच्यून भगवान का ड्रेड मैंने वेरी डेंजरस लुकिंग ट्राइडन इज आल्सो शेकन. समुद्र भगवान के जो त्रिशूल है उसको भी एरियल ने हिला दिया था. So Ariel could feel the waves with fire and cracks. Crack means वो सल्फर का थंडर एंड लाइटनिंग, आग निकल रहा था, उसमें से धुआं निकल रहा था, और सल्फर कलर का चारों तरफ समुद्र में फैल गया था. और नेपच्यून भगवान को ऐसा लग रहा था कि एरियल ने कैप्चर कर लिया, उनका वेव्स को कैप्चर कर लिया, और उनका जो ट्राइडन है, ट्राइडन मैंने त्रिशूल, वो भी हिल चुका था. Thereby, Ariel is more powerful than even Neptune god. Neptune is a god of sea.
who is supposed to be a very powerful god because he is very powerful. So god of sea is supposed to be more powerful. So नेपच्यून भगवान के समुंदर के वेव्स पे सल्फर कलर का आग दिख रहा था चारों तरफ। वो जैसे क्रैकर से क्रैक क्रैक निकलता है, फुलझड़ी जैसा आग निकल रहा था। और नेपच्यून को कैप्चर कर लिया था एरियल ने और उनके वेव्स को हिला दिया था और उनका ट्राइडेंट भी कांपने लगा था। So this might be hyperbole, but since Prospero is so powerful, we can't take it as a joke. So this is possible. So we have seen in Act 1, Scene 1. So Ariel is saying the fire and crack means समुंदर पे चारों तरफ आग और क्रैक और सल्फर कलर का आग धुआं था। समुद्र भगवान को मैंने बिसीज कर लिया था, मैंने कैप्चर कर लिया था और उनके वेव्स कांप रहे थे मेरे डर से। और उनका ट्राइडेंट, उनका त्रिशूल, समुद्र भगवान का त्रिशूल को भी मैंने हिला के रख दिया था। Prospero saying my brave spirit, very good, बहुत अच्छा, very good. Prospero is after all happy because उसके स्टूडेंट ने मतलब उसके सर्वेंट ने इतना अच्छा काम किया। So Prospero is saying who was so firm and constant, मैंने brave that coil would not infect his reasons. So Prospero is saying कोई इतना बहादुर था कि whose brain could endure it. कोई भी ऐसा बहादुर इंसान था जैसे थंडर लाइटनिंग आग, नेपच्यून भगवान का ट्राइडेंट सेक हो रहा है और उधर से थंडर एंड लाइटनिंग के भगवान से ज्यादा पावरफुल थंडर एंड लाइटनिंग हो रहा है। तो कोई ऐसा था, वाज देयर एनी पर्सन हु सो फर्म, सो माने स्ट्रांग, बाहुबली टाइप, सो कांस्टेंट, माने सो डिटरमाइंड दैट कॉइल वुड नॉट इन्फेक्ट हिज रीजन। मतलब दिस इफेक्ट, कॉइल मतलब होता है ना वो कछुआदानी, कि ऐसा इफेक्ट की वजह से ऐसा इंसान था जिसका रीजन अभी भी नॉर्मल था, जो घबराया ना था, जो डरा ना था, कोई ऐसा था। Prospero is indirectly trying to say कि मेरे मैजिक से कोई डरा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? मेरे मैजिक से कोई ना डरे? So this is Prospero indirectly fishing for compliments. So he's saying कि was there anybody who was so constant, who was so firm, so resolute, so determined, so strong that his reasons were not infected and he did not coil down? वो डरा नहीं, कोई ऐसा था? Not a soul. Really saying नहीं सर, नहीं, एक आदमी भी नहीं था जो डरा ना हो। बट एवरीबडी, बट मैंने कोई भी ऐसा नहीं था, बट सबको ऐसा फील हो रहा था। दे ऑल फेल्ट अ फीवर ऑफ मैडनेस, सब पागल हो गए थे डर से। एंड प्लेड सम ट्रिक्स ऑफ डेस्परेशन, मतलब कुछ लोग पागल होके पानी में कूद रहे थे, कुछ आग में कूद जा रहे थे, कुछ मतलब दे वर बिहेविंग एबनॉर्मली। ऑल बट द मैरिनर्स plunged into the foaming brine and quit the vessel. मतलब सब लोग मैरिनर्स लोग को छोड़ के पानी में कूद गए। They plunged, मतलब jumped into the foaming brine, मतलब salty water, and they left the vessel. And there was fire all around. फिर एरियल ने चारों तरफ आग लगा दिया। And King's son Ferdinand, with hair all standing, किंग का बेटा फर्डिनेंड, उसका बाल ऐसे टेंशन से खड़ा, सेंटर सॉक जैसा। His hair all staring up like reeds. Reed is the name of a plant. एकदम ऐसे straight होता है। So फर्डिनेंड का बाल भी ऐसे straight था। He was the first man who leaped into the water and said, hell is empty and the devils are here. So Ferdinand jumped into the water and says कि पूरा जहन्नम का हेल के सारे डेविल यहीं आ गए. So he jumped from the ship into the water, into the ocean. So Ferdinand, his hair was all standing up like reeds, like plants which are very straight. So Ferdinand hair ऐसे खड़ा हो गया था, वो डर से बेचारा पानी में कूद गया और कूद के बोल रहा जहन्नम के सारे शैतान यहाँ आ गए शिप में. Prospero, why, that's my spirit. Prospero saying wow, wow, very good, very good, that's my spirit. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया मेरे मैजिकल स्पिरिट ने. But was not this near the shore? Prospero saying ये समुद्र के किनारे हुआ ना अभी अभी. Ariel is saying close by sir, बहुत करीब में. By master. Ariel is saying हाँ सर एकदम अभी इस समुद्र के, यहाँ समुद्र और यहाँ आपका आइलैंड है, बस आइलैंड के बगल में, क्लोज बाय. Prospero.
बट आर दे सेफ एरियल? प्रॉस्पेरो सिंह, ये सब थंडर लाइटनिंग तो ठीक है, नेपच्यून भगवान का ट्राइडेंट हिलर ठीक है, जोब से भी ज्यादा तुम्हारा थंडर एंड लाइटनिंग हुआ, तुम समुद्र को कैप्चर कर लिए, वेव्स पे सल्फर बिछा दी, आग, क्रैक, धुआं सब हुआ ठीक है, लेकिन सब लोग सेफ तो हैं। एरियल इज सेइंग सर नॉट हेयर पेरिश्ड, एक बाल भी किसी का बाका नहीं हो, कुछ बर्बादी नहीं हुआ, नॉट ए हेयर इज डिस्ट्रॉयड of the sustaining garment, not a blemish, और उनका जो गारमेंट है which is helping them to survive, उसमें एक दाग तक नहीं है, not a blemish, not a spot is there in the dress. So Ariel is saying sir सब लोग सेफ है, किसी के गारमेंट में कोई दाग तक नहीं हुआ, but fresher than before, और पहले से भी अच्छा उनका ड्रेस हो गया. Of course magic can do anything, so magic probably made their dress much better than what they had before. As you bade me, मैंने ordered me, in troops, मैंने group, I have dispatched, मैंने separated them. So Ariel is saying to Prospero के साथ, जैसे आपने कहा था कि अलग अलग लोगों को अलग अलग ग्रुप में separate कर देना, I have done it. I have separated them about the island. The king's son, I have landed by himself. So he's saying, sir, Ferdinand अकेले है, उसके साथ कोई नहीं है. Whom I left cooling with Simon, where he is crying, cooling with Simon, expressing his sorrow. ठंडी आहें भर रहा है, रो रहा है, because his father is dead, he's separated. So he is cooling his sigh. He is sitting in an odd angle of an island. So he is sitting in the corner of an island. His arm in a sad knot. मतलब वो ऐसे करके रो रहा है. So his arm in a sad knot. He is folding and he is crying. Okay. And of the king's ship, mariners say how. Prospero is saying, अच्छा ये बताओ कि king का ship का क्या हाल? Mariners लोग कहाँ हैं? How did you dispose them? Where did you leave them? मतलब प्रॉस्पेरो पूछ रहा है मैरिनर्स लोग को तुमने कहाँ छोड़ा, शिप को कहाँ छोड़ा, बाकी लोगों को बारे में बता, बिकॉज ऑडियंस इज आल्सो वेरी क्यूरियस टू नो कि बाकी लोग कहाँ गए. एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द फ्लीट. सो एरियल इज सेइंग सर बाकी रेस्ट ऑफ द फ्लीट में रेस्ट ऑफ द पीपल इन देयर वर मेनी शिप्स. ओके देयर वर मेनी शिप्स, नॉट वन. जैसे वो पार्लियामेंट में लोग जाते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर लोग तो अकेले थोड़ी ना टोटो में जाते हैं. सो दे हैव सीरीज ऑफ कार्स, फ्लीट ऑफ कार्स. सो there were many ship, SHIP ship. So the rest of the ship, SHIP ship, is all gone. वापस भेज दिया गया. Ariel is saying safely in the harbor the king ship. माने king का ship जो है हार्बर में है. In the nook माने एक कॉर्नर है where you have called me once. बोलो सर याद है एक बार हमको रात को 12 बजे मैजिक करने के लिए जहाँ बुलाया था, वहीं पे I have kept the ship, king ship. Where you had once called me in the midnight to fetch the dew from the still wakes Bermuda. बर्मुडा में जो डिस्टर्ब जगह है वहां से आपने हमको एक बार मैजिकल सामान लाने को भेजा था ना सर, वहीं पे मैंने शिप को छोड़ दिया. There is the ship hidden. सी मैंने शिप. And the mariners all under hatch stove, मतलब एक दरवाजा है which is closed, which is blocked. So within the blocked cabin, within the blocked doors, all mariners are made to sleep. With a charm joint, they are suffered joint. मतलब एक तो वो मैजिक से सो गए और एक वो थक गए तो सो गए. I've let them sleeping. And for rest of the fleet, मैंने बाकी जो शिप था, I've dispersed them. मतलब उनको अलग अलग जगह भेज दिया वापस. So कुछ देर बाद वो सब मिलेंगे. वो शिप्स कुछ देर बाद मिलेंगे. So mariners are here describing mariners लोग को अलग अलग जगह छोड़ दिया गया है. मैरिनर्स लोगों को एक शिप जो अलोंसो के साथ था वो है, एक छोटा सा केव जैसा है वहां है, और बाकी जितने सारे शिप है वो सबको वापस भेज दिया गया. सो मैरिनर्स आर ऑल अंडर हैच स्टोव, मतलब इन ए केबिन, दे आर विद लॉक डोर्स, मतलब उसको मतलब ब्लॉक कर दिया गया, वहां वो है. अभी तक चार्म, मतलब चार्म मैजिक जॉइंड बाय सम काइंड ऑफ tiredness, they are sleeping now. And for the rest of the fleet, बाकी जो ship है, I have dispersed them मतलब I have separated them so that they can go, and they will all meet again upon the Mediterranean Sea. मतलब वो लोग आगे Mediterranean Sea है, वहां जाके वो लोग मिलेंगे. And they are all going bond, मतलब they are all targeted towards going to Naples. Supposing that they saw the king's ship wrecked and his great person perished. तो जितने भी लोग वापस जाएंगे, they will suppose, they will think, they will assume that they have seen the king's ship getting wrecked. मतलब उन लोगों को लगेगा कि अलोंसो का शिप जो है वो टूट गया है और अलोंसो
king of Naples, वो मर गए हैं, पेरिस मैंने die. Prospero. Ariel, thy charge is performed exactly. Prospero is saying, wow, very good, very good. जैसे मैंने तुमको कहा था Ariel to raise the ship, you have exactly done like that. Very good. But there is more work. Prospero is saying कि तुमने इतना अच्छा काम तो किया, लेकिन अभी और काम. Like most of the parents, they tell their kids, ये करो, very good बेटा. अच्छा, ये भी करो बेटा. And then there is no into it. So Prospero is saying, okay, here is more work. Do it. What is the time of the day? Prospero is saying, अभी दिन में कितना बजा? Past the midnight season, मतलब 12 बज गया. At least 2 glasses between 6 and now must be spent very preciously. Prospero is saying कि अभी से लेके शाम 6 बजे तक ये टाइम को बहुत ही precisely, exactly, meticulously, सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा. Ariel is saying, sir, is there more toil? और काम है sir. Toil माने hard work. So Ariel is saying, sir, more toil, sir. Since you did give me pain, let me remind you. Ariel बोला, sir, आप हमको इतना दुख दर्द दे रहे हैं, हमको remind करने दीजिए कि you had promised me that which is not yet performed. बोला, sir, आप हमको promise किए थे कि आप हमको छोड़ देंगे, you will make me free, but sir, you have not let me free. Prospero is saying, wow, now moody. He's saying, अरे Ariel क्या हुआ, इतना moody क्यों हो गए? मतलब moody मतलब whose moods keeps on changing. What is that you demand? Prospero is saying, तुमको क्या चाहिए? Ariel is saying, sir, my liberty. हमको मेरा freedom चाहिए. Before the time be out, Prospero is saying, time से पहले liberty. छुट्टी नहीं मिलेगा, time से पहले नहीं मिलेगा. No more. Ariel is saying, I pretty remember I have done worthy service for you. Ariel बोला, सर हम आपके लिए कितना वैल्यूएबल काम किए, थंडर एंड लाइटनिंग रेज किए हैं, सब लोगों को अलग अलग किए हैं, आग लगाए हैं, सल्फर समुंदर में बिछा दिए, नेपच्यून भगवान को ऐसा लगा कैप्चर कर लिए. आई हैव बीन मोर पावरफुल देन द गॉड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग. आई हैव डन वर्दी सर्विस फॉर यू. आई हैव टोल्ड यू नो लाइज, और कभी झूठ भी मैंने नहीं बोला. आई हैव डन नो मिस्टेकिंग, मैंने नो मिस्टेक, नो डाउट्स, सर्व यू विदाउट एनी ग्रज. मैंने आपको काम किया बिना कोई ग्रज के, कंप्लेन के. आई डिड नॉट ग्रम्बल, कोई कंप्लेन मैंने नहीं किया. एंड यू प्रॉमिस्ड टू डिक्रीज, अबेट मैंने डिक्रीज 1 year. सेड सर आपने कहा था कि अगर मैं सही से काम करूंगा तो माय नंबर ऑफ इयर्स दैट इज सपोज्ड टू बी इन इम्प्रिजनमेंट, उससे आप 1 साल कम कर दीजिएगा. Does the forget what torment I did leave you the? Prospero saying, Ariel बाबू भूल गए कि I saved you from such powerful torment, मैंने torture. Ariel saying, no sir. Prospero saying, you do. Do मैंने you, dos मैंने do. You do. And think that if you can trade on the ooze of the salt deep. So Prospero is saying, if you can walk, WL के walk, on the waves, you think you're great. So Prospero is reminding Ariel that it is Prospero who actually made him free out of that trunk of the tree. It is Prospero who taught him how to tread on the ooze, when walk on the salty water. If you can run upon the sharp wind of the north, he can fly with the wind. So Ariel can fly with the wind. So Prospero is saying, okay, Babu, if you can tread when walk on the salty water, ooze mane waves of the water, if you can run in with the wind, you do me business in the veins of the earth. ये body का vein, तो earth का vein मतलब जमीन के अंदर. So Prospero is saying to Ariel कि Ariel अगर तुम पानी पे चल सकते हो, north wind के साथ उड़ सकते हो, earth के अंदर जा सकते हो, when it is baked with frost, मतलब जब पूरा अर्थ जो है फ्रॉस्ट से भरा हो तब भी तुम जमीन के अंदर जा सकते हो. So do you think that you have become much better than me and greater than me? So Prospero is reminding Ariel that just because you can walk on water, just because you can go deep into the earth, just because you can go into the earth, even when the earth is covered with frost, do not think yourself greater than me. Ariel is saying, no sir, I do not. I do not think sir myself greater. Prospero. You lies, malignant thing. Prospero is saying, तुम झूठ बोल रहे हो. Evil thing. Did you forget the fowl with Sycorax, who with age and envy was gone into a who? So Prospero is reminding Ariel and thereby informing the audience that what is the background of Ariel.
So Prospero is reminding Ariel कि Ariel, you are a malignant thing. तुम हो ही एकदम evil thing उस समय. Does the forget the foul with Sycorax? बोल के भूल गए Sycorax वो चुड़ैल को, डायन को, जो एज से और एनवी से वो हुप हो गई थी, उन्हें ऐसे बेंड डाउन हो गई थी. Does the did you forget? मैंने has the forgotten मैंने did you forget? एरियल इज सेइंग नो सर, हमको साइकोरेक्स भी याद है, वो बूढ़ी हो गई थी ये भी याद है, वो ऐसे बेंड डाउन चलती थी ये भी याद है. एरियल इज सेइंग नो सर, हम भूले नहीं है सर, हमको सब याद है. प्रॉस्पेरो सेइंग यू हैज मैंने यू हैव फॉरगॉटन. वेयर वाज शी बोर्न? स्पीक. प्रॉस्पेरो सेइंग बताओ बताओ, क्विज मास्टर की तरह बताओ, वो कहाँ पैदा हुई थी, कहाँ से आई थी वो. सर एल्जियर, इट इज इन अफ्रीका. और वसी मस्ट आई इन वंस रिकाउंट टू यू, मैंने रिमाइंड यू ऑफ व्हाट हैज बीन. तो प्रॉस्पेरो सिंह, तुमको लग रहा है ना हर महीना में एक बार रिमाइंडिंग का दरकार है कि तुम कहाँ थे, साइकोरेक्स कौन थी, तुमको हम कैसे बचाए, तुम ट्रंक के ट्री में कितने साल थे, फिर हम आए, फिर ट्री के ट्रंक से तुमको निकाले. तो प्रॉस्पेरो सिंह टू एरियल के एरियल, आई शुड remind to you what has happened to you every month, which you have forgotten. This damned weak Sycorax means this cursed weak Sycorax who has done some mischief manifold, मैंने बहुत किस्म का वो नापाक evil काम की थी, and she has done sorceries, मैंने black magic terrible, बहुत ही भयानक भयानक काम की थी. It is so dangerous that it cannot even enter into human ear. मतलब वो इतना भयानक भयानक काम की होगी, eating kids और burning people alive, और चुड़ैल लोग जो करती थी उस जमाने में. तो सॉर्सरीज मैंने ब्लैक मैजिक साइकोरेक्स ऐसा की थी कि इवन इट कैन नॉट इवन एंटर ह्यूमन ईयर. मतलब कान उस भयानक भयानक चीज को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है. So Sycorax, according to Prospero, has done some very mischievous thing, very evil thing, very inhuman thing from Algier. You know that was banished. So Sycorax was removed from that place. Sycorax was removed from that place. Sycorax को वहां से मैंने एल्जियर से हटा दिया गया बिकॉज वो कुछ नापाक काम की थी, इतना नापाक कि बताया भी नहीं जा सकता है. बट शी हैज डन समथिंग वन गुड थिंग एंड दे वुड नॉट टेक हर लाइफ. उन्हें कुछ अच्छा भी काम की थी तो उन लोगों को दया भी आ रहा था. और उस टाइम साइकोरेक्स वाज प्रेग्नेंट आल्सो, सर डिड नॉट टेक हर लाइफ. इज इट नॉट ट्रू? एरियल सेइंग यस सर, यस ट्रू ट्रू ट्रू. प्रॉस्पेरो, दिस ब्लू हाइड हैग मतलब चुड़ैल ब्लू, it was believed that all black magic people had special blue color eyes. आज मूवीज में दिखाता है जब कोई विलेन आता है तो ब्लू आईज हो जाता है. So Prospero is saying this blue colored hag मैंने चुड़ैल डायन was bought hither मैंने here with a child, मतलब तब उसके कोक में सी in her womb she still had a child, and here was she led by the seller लोग उसको यहाँ लाके छोड़ के गए as a punishment. जैसा काला पानी में जेलस को छोड़ के जाया जाता है, वैसे ही साइकोरेक्स को इस आइलैंड में छोड़ के गए थे लोग, सेलर्स लोग. Though my slave, as you did report yourself, was on servant then. So Sycorax came here and made Ariel a servant. For though was a spirit very delicate. Prospero is saying you are very weak spirit. मतलब तुम बहुत weak मतलब magical spirit थे. To act her earthly and abhorrent command. वो बहुत ही घिनौना, earthly मैंने नीच और abhorrent मैंने hateful command देती थी. So once you used to refuse her haste, मतलब इतना haste मैंने करती थी जल्दी जल्दी, तो तुम थोड़ा उसको टाल देते थे. And because of all this, because you could not perform her work on time, she did confine thee, मैंने imprisoned you. तो साइकोरेक्स क्या की, एरियल को imprison कर दी, मतलब जेल में रख दी. By the help of a more potent minister, मतलब साइकोरेक्स के बाद और भी बहुत सारे मैजिकल स्पिरिट्स थे. तो with the help of those magical spirits, साइकोरेक्स क्या की कि एरियल को एक ट्रंक में बंद कर दी. इन हर मोस्ट इमिटेबल रेज, मतलब इन वेरी अनकंट्रोल्ड गुस्सा जब उसको आया तो क्या की, एक पाइन ट्री को ऐसे खोल दी, उसमें तो होल बना के एरियल को डाल दी. इम्प्रिजन्ड एरियल पेनफुली फॉर a dozen years. So Ariel was imprisoned into the trunk of the tree by Sycorax for 12 years because he could not do the work on time, because he was not prudent, because he was not very sincere. Within the space, within the trunk of the tree, जब वो डाल दी उसके कुछ साल बाद वही मर गए and left you there. And there you did vent thy groans as fast as mills will strike. मतलब व्हील जो चलता है तेज तेज, उससे भी तेज तेज ये
एरियल ट्री के ट्रंक में रो रहा था. When this island, safe for the sun, this is lived here. मतलब जो चली गई, मतलब साइकोरेक्स तो मर गए, लेकिन एक अपना वो बच्चा छोड़ के गए. उस बच्चे का नाम है कैलिबन. He was a freckled help, मतलब एक ugly child था with lot of spots. Okay, he was hag-born, not honored with a human shape. मतलब वो of course चुड़ैल का बच्चा है या डायन का बच्चा है, तो ह्यूमन बीइंग जैसा तो होगा नहीं अकॉर्डिंग टू स्टीरियोटाइप थिंकिंग. तो this Sycorax left the child, मतलब gave birth to a child. This child was heckled, help माने ugly spotted child. He was hag माने चुड़ैल से पैदा हुआ था. So he was not gifted with the face and looks of a human being. Ariel is saying, yes, sir, Caliban. Yes, sir, her son, Prospero. Dull thing, I say so, that Caliban, with whom I kept service. बोल रहा वो Caliban एक डल है, उसको मैंने अपने सर्विस में रखा, अपने काम में रखा. And you know what torment I did find. बोल रहा तुमको पता है एरियल कि तुम कितने बड़े टॉर्मेंट में थे, और तुम इतना ग्रोन करते थे, इतना चिल्लाते थे. Even Wolf used to feel pity on you. Wolf are normally people who are very hard-hearted. Wolf are normally people who are very prone to fight and bloodshed and crying and pain. लेकिन wolf लोग भी एरियल के चिल्लाने से डर जाते थे. So Ariel used to shout out of pain so much that even wolves used to howl, and it penetrated the angry bears. मतलब जो जानवर लोग थे उनका भी दिल दहल जाता. एरियल का दुख देख के इतना दुख को एरियल करता कि सारे जानवर तक उससे डर जाते, उनको भी दया आता, माया आता. It was a torment to lay upon the damn Sycorax, which you could not undo it. तो Sycorax उसको गुस्सा में उसको ट्री के ट्रंक में बंद तो कर दी, लेकिन वहां से उसको बाहर नहीं निकाल पाई. इट्स लाइक मेकिंग पासवर्ड बट फॉरगेटिंग इट एंड नॉट एबल टू रिट्राइव इट. सो वो उसको मैजिक वैजिक करके ट्रिंक में बंद कर दी, लेकिन उस ट्री के बाहर से कुड नॉट अनडू इट. मतलब होता ना लैपटॉप में undo button कुछ लिख के then you undo it. So she could not undo it. It was my art, Prospero's art, that when I arrived and heard you crying, I saved you. So Prospero is saying, no, Ariel, it was my art that I saved you from the trunk of the tree. And I made the tree gap its mouth. मैंने tree के trunk को ऐसे, इसको बोलते gap. तो tree के trunk को मुंह को ऐसे किया. And I made the pine tree open its trunk and let you out of the trunk of the tree. So Prospero is saying, Ariel, भूल गए Ariel कि तुम ट्रंक में रोते थे तो बियर भी कांप उठती थी. तुम भूल गए कि तुम जब चिल्लाते थे तो even wolf used to cry. I came, and because of my magical power, I opened the trunk of the tree and made you out. Ariel is saying, I thank you, sir. Thank you, sir. Very much, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Prospero is saying, if you murmur, I will rend an oak tree and peck into your knotted areas. He's saying कि ज़्यादा कुछ बोलोगे ना तो ये trunk of the tree में फिर तुमको हम डाल देंगे. And I will peck you in the knotty entrails. मतलब I'll put you into the trunk of the tree. And there you will howl when I keep crying for 12 winters. मतलब 12 साल तक तुमको हम इसके अंदर में बंद कर देंगे. Pardon me, sir. Really saying, sir, माफ कर दीजिए, sir. Sir, माफ कर दीजिए. I will correspond to whatever command you will say. Means I will listen to whatever order you will say, sir. And I will do it spiritingly. I will do it willingly, lovingly, sir. हम सब करेंगे, sir. Do so. After 2 days, I will discharge you. Prospero, ठीक है, करो ना. 2 दिन बाद तुम मुझे छुट्टी दे ही दे. 2 दिन और तो करो. After 2 days, I will make you free, discharge you, free you. What is my noble master? What shall I do? Say, what shall I do? एकदम तैयार हो गया ये एरियल. Ariel is saying, हाँ सर, क्या करना है बोलिए सर, क्या करना है सर, बोलिए क्या करना है, what shall I do? Prospero, go and make yourself invisible like the nymph of a sea. Prospero is saying, एक काम करो, तुम जाके अपने आप को एक nymph बनाओ, परी बनाओ, और वो परी सिर्फ हमको दिखना चाहिए और किसी को नहीं. To no other sight but my. मतलब you should be only visible to me and nobody else. And to every eyeball else, मतलब you should not be visible to any other eyeballs. Go take thy shape and come here. जा और वो invisible हो क्या. Go and hence with diligence. मतलब go and do it with lot of diligence. मतलब with lot of focus and energy. जाओ willingly करो. So Prospero is sending Ariel to become invisible and come into the form of a nymph, sea nymph.
So Ariel goes. Now Miranda was sleeping. So Prospero is saying to Miranda, Miranda, wake up, my dear heart, wake up. You have slept well. Wake up. Miranda wakes up. The strangeness of your sleep has put heaviness in me. Miranda is saying, पापा आपका वो कहानी ना अजीब था, पापा हमको सुला दिया. Actually कहानी नहीं सुलाया, मैजिक से वो सो गई, इसको क्या पता. So Miranda is saying the story was such strange that it made me heavy and it made me go to sleep. Prospero, shake it off. Prospero is saying चलो बेटा ये सपना हटाओ, we will go and visit Caliban. He's saying चलो हम लोग Caliban के पास जाते हैं. My slave who never gives us, he elders when he gives us a good answer, kind answer. So Prospero is saying to his daughter कि बेटी चलो, we will go and meet Caliban who never gives us good answers. So Miranda rises up and she says, sir, Caliban is a villain, sir. I do not like to look on him. मैंने उसका चेहरा तो हमको देखने का दिल नहीं करता. But it is important. We cannot miss him. Prospero बोल रहा हाँ है तो वो एकदम अजीब, लेकिन उसको हम तो आएगा ही ना. So we can't miss him. He brings fire. वो हम लोग के लिए वो सब चूल्हा वाला जलाता, आग लाता है, लकड़ी लाता है. Fetch मैंने brings in wood from the jungle. Serves in the offices. बहुत काम करता है. Profits हम लोग को profit मिलता है उससे. हनु slave Caliban the art speak. फिर वो लोग कैलिबन के केव में जाते बोलते ओ कैलिबन यू अर्थ मतलब मट्टी कीड़ा बोलो. Caliban is saying there is wood within. Caliban is saying कि सर ऑलरेडी बहुत वुड है, हमको अब कोई काम करने का दरकार नहीं है सर, आप हमको लकड़ी के लिए बुला रहे थे तो लकड़ी ऑलरेडी है. Prospero, come forth I say, there is other business for you. Prospero is saying नहीं नहीं लकड़ी नहीं चाहिए, तुम बाहर निकलो, बाहर निकलो. Come out of the cave, you have another work to do. Come, you tortoise, come out. Enter Ariel with a water nymph. Ariel has come in the becoming invisible. Audience can see, but Miranda cannot see, and nobody on the stage can see except Prospero. So Ariel has come becoming a water nymph. So Prospero is saying to Ariel, fine apparition means fine dress, my quaint, my good Ariel. Hearken thee. Then Prospero is talking to Ariel. He whispers it. Prospero is saying to Ariel, my lord, it shall be done. Ariel is saying, ये सब हो जाएगा. Prospero. Prospero is talking to Caliban. He says, you poisonous slave who got by devil himself upon the wicked dam, come forth. Prospero is saying, you, तुम एक सांप हो, or you have been created by a devil. Your father was a devil, and your dam and a mother was a wicked witch. Come forth. So Prospero गाली देके उसको बुला रहा है, चुड़ैल का बच्चा, शैतान का बच्चा, बारह, बारह. So Prospero is calling Caliban from the cave, and he is calling him a snake, poisonous snake. Of course, with a very degradatory sense that he has been very poisonous for them. And he's saying that you have been created by devil himself. Your mother was a witch, come forth. And a Caliban. So Caliban is abusing. He's saying, as wicked dew that ever my mother brushed with raven feather from the holes of fen drop on you. A southwest blow on your blister all over. So ये गाली है, मतलब ग्रज, एक मतलब दुख है, एक खुन्नस है, एक hatred है. So he's saying कि all that wicked dew that my mother collected from the raven's feather and all unwholesome fen drop on you. So he's saying कि मेरी मम्मी साइकोरैक्स जो ड्यू को कलेक्ट करती थी रेवन के फेदर से ब्लैक मैजिक करने के लिए, वो सब गंदा गंदा चीज जो अनहोलसम फेन मैंने मार्सी प्लांट से कलेक्ट करती थी, वो सब तुम दोनों बेटा सॉरी पापा और बेटी पे गिर जाए. Both of you, Miranda and Prospero. So he's saying the wicked dew that ever my mother brushed, मतलब वो ड्यू जो मेरी मम्मी कलेक्ट करती थी रेवन के फेदर से, वो तुम्हारे मुंह में गिर जाए. And southwest wind blow on you and create blister all over. उस जमाने में बिलीव था और सच भी होगा कि when a particular wind used to blow, it used to create blister. So he's saying कि may that wind blows and create blister on you. Prospero. For this be sure tonight you shall have pen up thy breath. Prospero बोला तो उनको ये गाली दी है ना, साउथ विंड हमको ब्लिस्टर कर दे और
वो गंदा गंदा ड्यू जो तुम्हारी मम्मी रेवन के वजह से कलेक्ट करती थी मेरे मुंह पे गिरे, इसके लिए आज रात को तुम्हारे बॉडी में बहुत सारा पेन होगा, स्टिच कर देंगे मुंह पे, ये सब साइड ऐसे स्टिच कर देंगे, एंड देयर विल बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एंड अर्चिन मैंने मैजिकल स्पिरिट शैल वर्क द वास्ट ऑफ द नाइट, मतलब पूरा रात वो मैजिकल स्पिरिट्स लोग तुमको परेशान करेंगे। ऑल एक्सरसाइज ऑन यू, मतलब वो सब तुम्हारे ऊपर चढ़ के तुमको पेन क्रिएट करेंगे, एंड यू शैल बी पिंच्ड एज हनीकॉम्ब, मतलब इसे मधुमक्खी लोगों को काट देती है, वो मैजिकल स्पिरिट्स लोग भी तुमको पिंच कर देगी, काट लेगी मधुमक्खी के बी के तरह। ईच पिंच मोर देन द बीज, मतलब बी काटती है तो सुनते हैं इतना फूल जाता है मधुमक्खी काटने से। सो हियर दिस मैजिकल स्पिरिट विल पिंच मोर देन द हनीकॉम्ब, मतलब हनी बीज लोग जितना पेन क्रिएट करती है उससे भी ज्यादा पेन होगा मैजिकल स्पिरिट से के काटने से। कैलिबन, आई मस्ट ईट माई डिनर दिस आइलैंड, कैलिबन अब समझ जाए कि ज्यादा गाली देने से और पनिशमेंट होगा। सो कैलिबन इज सेइंग आई मस्ट ईट माई डिनर, कैलिबन इज सेइंग मेरे डिनर खाने का टाइम है, एंड दिस आइलैंड इज माइन। तो कैलिबन इज सेइंग कि आइलैंड मेरा है, फ्रॉम माय मदर साइकोरेक्स, दिस आइलैंड बिलोंग टू साइकोरेक्स, सो आई एम सपोज्ड टू बी द ओनर ऑफ दिस आइलैंड which you have taken from me. So Caliban is blaming Prospero that this island belonged to me and you have taken it from me, from my mother. When you did first came, Prospero जब पहली बार आया था तो Caliban बोल रहा है, when you stroked me, मैंने, you loved me and you made much use of me, then you have taken advantage of me. I told you where is the water with berries in it and I teach you. ओके, सो ये बोल रहा है कि मैंने तुमको इतना कुछ बताया। ओके, so this is Caliban saying, Caliban is saying कि ये आइलैंड मेरा है और आपने ये आइलैंड को हमसे छीन लिया। देन प्रॉस्पेरो इज सेइंग कि I loved you so much, I taught you how to name the bigger light and the smaller light, I loved you so much. Caliban is saying, sir, मैंने भी तो आपको एडवांटेज दिया, I showed you all the secrets of the island, I showed you where there is fresh water, where there is barren place. Caliban is saying कि I was so bad, I should not have shown you this, cursed be I that I showed you this. फिर वो गाली दे रहा है, कैलिबन बोल रहा है कि जितना भी टोड बेटल बैट ये सब नेगेटिव नेगेटिव चीजें सब प्रॉस्पेरो को मुंह में गिर जाए। And he's saying, I am the subject of yours, बोल रहा हम तुम्हारे स्लेव हो गए, but I was my own master once upon a time. And you tie me, माने you keep me like a pig in this hard rock while you keep the whole island from me. बोला तुम पूरा आइलैंड खुद ही ले लिए और हमको एक केव में छोड़ दिए। Prospero, though most lying slave, Prospero is saying you are lying. Whom strike may move, not kindness. Strike माने beating. Prospero, तुम लातों के भूत हो कैलिबन, बातों से नहीं मानो। Prospero is saying कि only beating can affect you. Only beating can affect you. Love cannot. I have used thee, filled as you are. Prospero बोल रहा है तुम्हें घिनौना गंदा चीज हो, हम तुमको कितना अच्छा से यूज किए, कितना अच्छा से ट्रेनिंग दिए। I kept you with human care and lodged you in my own cabin, in my own cell. बोल रहा हम तुमको अपने रूम में रखे, मैंने वो केव वाला रूम में, and you did try to violate the honor of my child. बोल रहा हम तुमको अपने केव में रखे और तुम मेरी बेटी मिरांडा कोई उसके प्यूरिटी, मैंने उसको रेप करने का कोशिश किया। You tried to violate, मैंने rape the honor of my child. Caliban is saying, oh, if it had been done, you did prevent me, I would people this island with Calibans. ये बोल रहा अगर एक बार वो हो जाता ना, मतलब I would have had sex with Miranda, then I would have filled this island with many Calibans. So Caliban is saying कि ना ना ना, अगर आप हमको रोकते नहीं ना, if you had not stopped me to violate Miranda, then I would have filled this island with lots of Caliban. Miranda it gets angry and said, abhorrent slave, मैंने hated slave, which any print of goodness will not take. Miranda is saying कि तुम्हारे ऊपर कोई भी अच्छाई का असर हो ही नहीं सकता है. No amount of good deeds can affect you. Being capable of only ill. Miranda is saying कि तुमसे सिर्फ evil ही हो सकता है. I pitied you, took pain to make you speak. Miranda is saying मैंने तुमको कितना मुश्किल से लैंग्वेज सिखाया,
I taught you how to speak. Every hour I taught you something or the other. When you did not speak, you were like a ऐसे बोलते थे तुम. You were like a savage, like a wild animal. You did not know the meaning of the words, but you would all gabble, talk in your own brutish, matlab, like a jungly animal. I endowed the purpose. Matlab, I gave you purpose of life. I gave you a kind of meaning to every word. Which word meant what, you did not know then. बट दाई वाइल्ड रेस बोला तुम्हारा खानदान जात ही जो है ना साइकोरेक्स का जात या डेविल का जात इस रेस itself is so evil. Though did learn had in it which good nature could not abide by. Since your nature is so evil that goodness cannot go and remain there. मतलब ये कफ में अगर जगह हो तब तो कुछ रहे. ये इतना ही गंदा है कैलिबन कि उसके अंदर अच्छा रहने का जगह ही नहीं है. Good nature cannot abide in his evil nature. I mean, he is so filled with evil that goodness cannot go there. He's saying, but the vile race, मतलब Caliban का race, मतलब पूरा community black वाला, though did learn good things. तुमने अच्छे चीज से सीखा, लेकिन वो रहेगा कहाँ? Because the nature is evil, so the goodness could not remain there. It came out. Therefore, though was deserved confined to be this rock. So मिरांडा बोल रही है कि तुम्हारा औकात यही है कि तुम इस केव में रहो. यानी you deserve to live in this cave. Though had deserved more than a prison. Caliban is saying कि तुमको prison से भी कुछ बड़ा सजा मिलना चाहिए, because Caliban tried to rape Miranda. Caliban, you taught me language, and the profit of it, I know how to curse. Caliban is saying कि तुमको हमको लैंग्वेज सिखाया गया. Prospero taught Caliban the language, and he says अब इसका प्रॉफिट ये है कि हम इसी लैंग्वेज से तुमको गाली देंगे. Prospero taught language to Caliban. Now Caliban is saying, I will use these very language to abuse you. Red plague rid you for learning me. बोल रहा भगवान करे तुमको प्लेग हो जाए, तुमको लैंग्वेज सिखाया तो. Plague in those days was a very incurable disease. So you will read this word many times in the play. So Caliban is saying कि may you get red plague. It's a special kind of plague. So Caliban गाली दे रहा है, Prospero को बोल रहा है कि तुम हमको लैंग्वेज सिखाया ना, तुमको रेड प्लेग हो जाए. Prospero is abusing. Hack seed मैंने चुड़ैल का बच्चा. Hence go from here. Go. Fetch in fuel मैंने bring us wood. Prospero जा लकड़ी लेकर जा and be quick to answer the other bitches. बोला जाओ सब काम करो. And shrugged you not malice. बोल रहा है कोई भी काम मतलब बेदिली से मत करना सब. If you neglect कोई भी काम अगर Caliban neglect किया, or if you do it unwillingly, what I command I will wreck thee with old cramps. बोला तुम्हारा जो पुराना पेन है उसको और हम भड़का देंगे और उसमें दर्द पेन दे देंगे. Your bone will start paining and make thee roar. मतलब इतना तुमको पेन देंगे that beast will tremble at your din में noise. मतलब even wild animals will feel sad at the crying of Caliban. So Prospero is saying जाओ लकड़ी ला. And if you neglect anything, or if you do any work unwillingly that I command my order, I will rack thee with old cramps, and I will fill your body with pain. I will make your bone ache माने pain, make you roar. मतलब इतना तुमको हम pain देंगे that wild animals will have pity at you. They will be shaken at your pain. Caliban बोला no please ऐसा मत कीजिए. फिर Caliban अपने आप में बोल रहा I must obey him. I must obey him. Caliban बोल रहा Prospero को बात मानने होगा. His art is so powerful. मैंने इसका मैजिक इतना पावरफुल है. You would not control my damn god Shanawaz. He's saying कि मेरी मम्मी के जो भगवान थे, ब्लैक मैजिक के भगवान Shanawaz, ये उनसे भी ज्यादा पावरफुल है. So I have to listen to him, or he will make me a vassal of him. Means he will make मतलब he is so powerful that he can control Shanawaz and make him a fool of him. तो हम क्या है? So Caliban is bit wise, and he knows कि अगर Caliban Prospero का बात नहीं माना तो उसको punishment मिलेगा. So at last he has some kind of sense, and he says कि Prospero के पास बहुत power है. So if he can control my damn माने mother, my mother's god Stratovos, and make a fool of him, वो उसको control कर सकता है तो हमको क्यों नहीं? Prospero says, oh slave hence. Prospero is saying, go slave, go. Caliban goes away. Now in this part of the scene,
In this part of the scene, Prospero will make Miranda meet Ferdinand. So enter Ferdinand. Ferdinand was separated from the group of the king's men. So enter Ferdinand, Ariel invisible, playing and singing. So Ariel is singing a song. Come on to this yellow sand and take hand. Curtsy when you have kissed the wild waves. Put it fittingly here and there, and sweet spirit, hark, burden, hark, hark, hark. So this is the song that Ariel is singing for Ferdinand. So Ariel बोल रहा है काम गाना का लाइन्स है कि come to this sand as if it's calling Ariel and take hand मतलब हाथ लो courtesy that you have kissed the waves. Waves when they kiss they can create lots of magic. Wild waves मतलब जब spirits लोग kiss करते हैं तो waves को control करते हैं. Foot it fittingly here and there मतलब जब spirits लोग foot रखते हैं यहाँ वहाँ तो स्पिरिट्स लोग जब फूट यहाँ वहाँ रखते हैं स्पिरिट्स मैंने तो वो इलाके को कंट्रोल कर लेते हैं मैजिक से. तो ये गाना वाला गाना गा रहे एरियल बोल रहा है यहाँ आओ इस आइलैंड में और हमारे हाथ को पकड़ो. हम जब एक दूसरे को किस करते स्पिरिट्स तो वेव्स को कंट्रोल करते हैं. हम अपने फूट से जब इलाके को मतलब कंट्रोल कर लेते हैं. हार्क हार्क हार्क. तो ये गाना हो रहा है. भाव 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 वॉच डॉग इतना कुत्ता का आवाज हो रहा है बर्डनली. भाव भाव भाव. I hear the strain of Santikar cow cow cow. भाव 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 काव काव काव. ये गाना हो रहा है. So this song is actually to bring Ferdinand near to Miranda. This song is actually a kind of magnet that pulls Ferdinand to Miranda so that Miranda falls in love with Ferdinand and Ferdinand falls in love with Miranda. तो गाना हो रहा है. Ferdinand बोल रहा है where this music should be. बोल रही म्यूजिक आ कहाँ से रहा है. Is it in the air or is it in the earth or is it in the waves or sky? It sounds no more. अचानक गाना रुक गया. So ये बोल रहा है this waits upon the god of this island. Ferdinand thinks कि जो गाना है ये भगवान के बात को मान के मतलब ये गाना होता है. Some god at the island sitting on the bank weeping against the king my father wrecked. इस गाना का मतलब है कि भगवान गॉड इसको ऑर्डर दिए हैं. So he's singing this song. Weeping again the king my father's wreck. तो ये गाना गाने वाला गा रहा है कि मेरे पापा का शिप रेक्ट हो गया. The music created by the water. उसको लगा तो म्यूजिक उसके आसपास से जा रहा था. Allaying both the fury and my passion. मतलब मेरे इमोशंस और पैशंस के साथ मतलब मेरे साथ जो हुआ वो गाना वो गा रहा था. And you used to create those emotions in me. Hence I have followed it. और इट हैज ड्रॉन मी. सो फर्डिनेंड बोल रहा है कि हो सकता गाना को हम फॉलो किए या गाना हमको अपने तरफ खींच लिया बट इट इज गॉन. नाउ इट बिगिंस अगेन. बोल रहा है गाना चला गया था फिर आ गया फिर गाना आने लगा. फुल फैंटम फाइट thy father lies of his bones are coral met those are pearls that were his eyes nothing of him could fade. ये गाना अलग गाने में ये लाइन है कि फर्डिनेंड के पापा अलोंसो उसको लग रहा है फर्डिनेंड को मेरे पापा मर गए हैं. तो he believes in this song and he says full phantom 5 year father lies means your father has gone 5 unit in the sea. His bones have become coral मतलब उनका बोन कोरल रीफ बन गया और उस उनके आंख अलोंसो के आंख पर्ल्स बन गए. नथिंग ऑफ हिम इज देयर व्हिच डिड नॉट चेंज मतलब उनका बॉडी डेड बॉडी पूरा चेंज हो गया into something rich and strange. मतलब the body has changed into something better. It has been transformed into something better. Sea nymphs are ringing funeral bell. तो गाना गाने वाला गा रहा है कि समुंदर में जो स्पिरिट्स लोग हैं वो घंटी बजा रही है. thereby announcing the death of Alonso. Burden wedding ding dong ding dong bell Ferdinand. The deity when a song does remind me of my drowned father. Ferdinand बोल रहा है ये गाना तो ये बता रहा है कि मेरे पापा मर गए हैं. इट इज नॉट नॉर्मल बिजनेस बट साउंड मतलब ये कोई अर्थ का गाना नहीं है. ये कोई नॉर्मल
म्यूजिक नहीं, ये कोई भगवान, कोई डिवाइन, कोई स्पिरिचुअल साउंड है. विच ओज आई हियर इट नाउ अबव मी. बोल रहा रे ये गाना तो कभी ऊपर से हो रहा है. एक्चुअली वहाँ एक छोटा सा माउंटेन है, प्रॉस्पेरो वहाँ ऊपर में मिरांडा के साथ. तो प्रॉस्पेरो इज सेइंग टू मिरांडा, मिरांडा लुक देयर, सी see to that man Ferdinand and tell me how do you like it. Prospero is saying to Miranda that open the fringe curtain of the eyes. मतलब this is called fringe curtain, this eyelid. Fringe curtain है, ऐसे खुलता है तो आंख से दिखता है. तो Prospero is saying कि अपने इस आंख के पर्दा को उठाओ and say what you can see. So Prospero is saying कि इस आंख के पर्दे को उठाओ और देखो क्या दिखता है. Miranda has never seen a man except a father. Miranda has seen nobody. So she thinks that this is also probably one of the spirits, magical spirits of her father. So Miranda says, "Is it a spirit, Papa? And how beautiful he looks. Believe me, sir, he carries a brave form. ये तो बहुत बहादुर दिख रहा है, but it is a spirit." So Prospero is saying, "No, wench, when a girl, no, he eats and sleeps and has such senses as we have." He says कि 5 senses जैसे हमारे पास है, वैसे ये छोरों के पास भी है. This Ferdinand is like us. He has all the 5 senses like we have. And this gallant that you see was in the wreck. बोल रहा ये जो बहादुर आदमी को तुम देख रहे हो ना, फर्डिनेंड, ये भी शिप रेक में था. एंड ही इज समथिंग स्टेन्ड विद ग्रीफ, मतलब दुख से वो थोड़ा अभी उदास हो गया है. दैट इज द ब्यूटी स्कैन कर, मैंने ग्रीफ से ना थोड़ा ब्यूटी कम जाता है. मैंने ग्रीफ डिस्ट्रॉयज द ब्यूटी ऑफ ए पर्सन. एंड दो माइट कॉल हिम ए गुडली पर्सन, प्रॉस्पेरो सिंह अच्छा इंसान है. ही हैज लॉस्ट ऑल हिज फेलो मेंबर्स ऑफ द शिप एंड ही स्ट्रेज अबाउट, मैंने भटक रहा है. स्ट्रेज मैंने भटकना, वो भटक रहा है अपने पेरेंट्स, अपने अंकल, अपने मतलब किंग्समैन लोग को खोजने. मिरांडा, might I call him a divine thing, for nothing natural can be so noble. मिरांडा is saying ये तो कोई मतलब आम इंसान नहीं है, तो कोई डिवाइन है, बिकॉज कोई ऑर्डिनरी इंसान इतना अच्छा तो हो ही नहीं सकता. बस फिर साइड में बोल रहे तो हो रहा है, प्यार मोहब्बत चालू हो गया, हम जैसा चाहते तो वैसा ही हो रहा है. So Prospero is talking to himself and he says कि exactly like this I wanted and it is going on good. अच्छा. As my soul prompts, जैसा मेरा दिल चाहता था वैसा ही हो रहा है. And then he says to Ariel, I will free the Ariel, I will free you. So Ariel is only visible to Prospero. So Prospero is talking to Ariel aside and he says, Ariel, I will free you, I will make you free. Within 2 days I will make you free. Ferdinand. Seeing Miranda most sure, the goddess of whom this heir attend vouches my prayer. So Ferdinand is saying, okay, may God listen to my prayer. May know if you remain upon this island. So Ferdinand sees Miranda and he says, okay, do you live in this island? And that you will have some instruction. Give me how I can survive. So Ferdinand is asking Miranda, can you give me some instruction कि हम इस island में survive कैसे रह सकते हैं? But my prime request is, which I do pronounce and I do wonder, are you maid or what? So ये पूछ रहा है कि क्या तुम unmarried हो? So Ferdinand is asking कि do you live in this island? Then he's asking give me some instruction कि यहाँ कैसे survive किया जा सकता है. Then he says मेरा main focus question ये है कि are you a virgin? Are you unmarried girl? And I saying no wonder sir, I'm a maid, certainly a maid sir. My language, फर्डिनेंड बोल रहा है अरे ये तो इंग्लिश बोल रही है, हमारे लैंग्वेज को बोल रही है. मैंने सी स्पीकिंग, बिकॉज फर्डिनेंड को लगा कि जिंगल लल्लू जंगल में रहने वाले बर्मुडा ट्रायंगल में उसमें थोड़ी ना अंग्रेजी आता होगा. So Ferdinand is saying, "Oh, my language! I'm the best man that speaks." He's saying कि मैं country का सबसे best king हूँ, because he assumes his father is dead. Where I but spoken means कि जहाँ ये language बोला जाता है वहाँ का सबसे best मैं हूँ. How the best? Prospero बोला कैसे best? If the king were Naples to be alive, बोला kings of Naples अगर सुनेंगे उनको दुख नहीं होगा. You are saying yourself as the best, but the king is still there. So Ferdinand is saying same thing. हम ही है king of Naples क्योंकि मेरे पापा तो अब नहीं है. So he says to speak of Naples, he does hear me. बोल रहा हम अगर नेपल्स के बारे में बोल रहे हैं तो मेरे पापा का सोल जो है ये सब सुन पा रहा है. Now does he? I weep myself as Naples. So he says I'm weeping. I've become the king of Naples, but I'm crying because to become the king of Naples, I have to think, I have to accept that my father is dead.
with my own eyes, never since a behind the king my father is wrecked. बोल रहा हम अपने आंखों से देखे समुंदर में मेरे पापा का शिप wrecked हो गया. Miranda, alas mercy. And I say, oh God, have mercy on us. Ferdinand, faith, sir. With all this, Lord, the Duke of Milan and his brave son being twin, Ferdinand is saying कि Duke of Milan and his brave son जो थे कि उनके बारे में he is asking. So Prospero is here trying to make Ferdinand and Miranda fall in love. So Miranda has already fallen in love. So Miranda is saying Miranda has fallen in love with Ferdinand. Ferdinand is also fallen in love with Miranda. So यही तो वो चाहता था. So here he is saying that they have fallen in love with one another and they have exchanged eyes. They have fallen in love. Exchange, I mean they have exchanged their love. Now he's saying, delicate Ariel, I'll set you free. Then Prospero is saying to Ariel, कि हम तुमको free कर देंगे. I'll set you free. Then he says to Ferdinand, what sir? I fear you have done some wrong. So Prospero झूठ मूठ का Ferdinand से झगड़ा करके बोलता है, oh Ferdinand, सुनेगा, you have done some wrong. तुम एक गलती कर रहे हो. Miranda बोली, why speaks my father so ungently? मेरे पापा rough क्यों हैं? This is the third man that I ever look on. The first, ये बोल रही है कि ये तो जिंदगी में पहला बार हम किसी से मिले हैं and my father is speaking so rudely to him. एक मैं मिली थी अपने पापा से और ये Caliban ये थर्ड आदमी है. Pity makes my father be inclined in my way. So Miranda is saying, I pray to God कि मेरे पापा मेरे तरह ही थोड़ा kind हो जाए. Ferdinand. If virgin, Ferdinand Miranda से प्यार हो ही गया and he's saying कि if you are a virgin and if your affection has not gone to somebody else, अगर तुमको किसी से प्यार नहीं है, so I am the king of Naples, so I will make you the queen. Prospero बोल रहा है, soft, stop, one word more. Prospero बोल रहा है, they are in each other's powers, इन दोनों को प्यार हो गया. But the swift business I will make it uneasy. He's saying कि जो इतना जल्दी जल्दी प्यार हो ना उसको थोड़ा difficult कर देंगे, because anything that is easily achieved make the prize less valuable. So he says to Ferdinand, one word, I charge you that you attend to me. बोल रहा है यहाँ सुनो, मेरा बात सुनो, and you have removed me from my kingdom. The name that you were not your own. So he's saying कि एक island के तुम मालिक बनना चाहते हो, ये island मेरा है, या तुमको कोई भेजा है, and you have been sent here as a spy to win this island from me. I am the Lord on it. So Prospero झूठ मूठ का blame लगा रहा है Ferdinand को, and he's saying कि you have come here to usurp me, meaning you remove me from my island, and you have been sent here on this island as a spy to win this island from me. I am the owner of it. Ferdinand saying, no, I am not. I am a man. He says, हम spy बन के क्यों आएंगे? हम लड़ेंगे. मिरांडा प्यार में बावली होके बोल रही है कि there is nothing ill that can dwell in such a temple. Here temple is comparing it as a body. So Miranda is saying इतना अच्छा body shape में कोई evil नहीं हो सकता है. If the ill spirits are so fair house, good things will strive to dwell in it. So Miranda is saying कि अगर इसका temple माने body इतना अच्छा है तो इसके अंदर का spirit soul भी अच्छा ही होगा. Prospero to Ferdinand. So Miranda is also following. So Prospero is saying, speak not for him. Miranda is saying to his daughter, hey, तुम इसके लिए मत बोलो. Don't speak for him. He is a traitor. And Prospero is saying to Ferdinand, hey, चलो मेरे साथ. I will manacle thy neck. I will tie your neck and feet together. मैंने neck और feet को बांध देंगे. You will drink sea water. You will eat fresh brook mussels, मैंने जंगली plants with roots. Husk you will eat. Wherein the cradle grow, मैंने जहाँ acorn होता है वहाँ का जो घास भूस होता है वो खिलाएंगे हम तुमको. So Prospero has gone into a punishment mode for Ferdinand, and he says, Ferdinand, I will tie your neck and I'll tie your feet. Sea water will you drink. You will drink all those thorny bushes plant, jungly रूट वाला प्लांट. यू विल ड्रिंक हस्क, जो जानवर लोग घास खाता है, मतलब वो चारा जैसा जहाँ कौन उगता है वो सब खाओगे. फर्डिनेंड बोल रहा, नो आई विल रेजिस्ट दिस टिल माय एनिमी हैज मोर पावर. फर्डिनेंड तलवार निकाल लेता है, बोलता हम ये सब नहीं करेंगे, जंगल का पानी नहीं पिएंगे और ये सब नहीं खाएंगे. इफ आई कैनॉट फाइट विथ यू तब देखा जाएगा, लेट मी फाइट.
So he draws his sword, but the sword falls because of magic. So Miranda is saying, "Oh, Papa, dear father, make him not so rash at trial. He's a gentle and not a bad man." Miranda बोली, "पापा पापा आप इसके साथ ऐसे मत कीजिए पापा. He's a good man. ऐसा मत कीजिए. He's a good human being, not fearful." Prospero बोल रहा, "What? My foot, my tutor." बोल रहा, मेरी बेटी हमको सिखा रही है. Prospero बोला, "चलो तलवार लो. Let me see. लड़ पाओगे? You make a show, but you dare not strike." बोल रहा, तुम तलवार तो उठा सकते हो लेकिन मार नहीं सकते. Because your conscience is possessed with guilt. मतलब तुम्हारे सोल को मैंने ऐसा फील कर दिया है कि तुमको अजीब लग रहा है because of magic. You will not. You're feeling guilt in trying to attack me. Come forth, what बोल रहा है बाबू, उधर चलो चलो चलो. For I can see here you can disarm thee with the stick. बोल रहा देखो ऐसे मेरे स्टिक से तुम्हारा तलवार हाथों से छूट जाएगा. So here Prospero takes his magical wand and removes the sword of Ferdinand from his hand. And make thy weapon drop. So the weapon of Ferdinand drops. Miranda, I beseech you, Father. Miranda saying, "Papa, please ऐसे मत कीजिए पापा. Hang not on my garment." Prospero, चलो मेरा कपड़ा को छोड़ो. Hang not. Miranda saying, "Sir, have pity. I will be his surety." अभी अभी उसको मिली है, उसका surety बन रही है. Miranda saying to her father that father, he is a good human being. I am taking the guarantee. ये अच्छा इंसान है. One word more. Prospero saying, इसके behalf में one word अगर तुम बोली, I will make you chide you if not hate you. मतलब I will scold you अगर तुम कुछ बोली तो. I may not hate you, but I will scold you. What? An advocate for an imposter? Prospero is saying to his daughter, ये cheater के लिए तुम advocate बन रही हो, उसका दलाली कर रही हो, उसका lawyer बन रही हो. Is an imposter. Ferdinand is an imposter. According to Prospero, he is just doing all this to taste the sincerity of Ferdinand. So Prospero is saying to Miranda कि बेटी तुम इसका वकालत करने आई हो, ये चिटिंगबाज, ये ट्रेटर का, imposter, cheater का. Hush! Don't think there is no such shape as he, having seen him but Caliban. तो पापा बोले, मिरांडा तुम इतनी बावली मत हो. तुमको क्या लगता है दुनिया में इसके जैसे लोग ही नहीं है? पुलिस वेंस टू मोस्ट ऑफ द मैन ही इज कैलिबन. तो प्रॉस्पेरो इज सेइंग कि दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं, इतने खूबसूरत लोग हैं कि कंपेयर टू दोज हैंडसम मैन, फर्डिनेंड ही एक कैलिबन होगा. देयर आर सो many varieties of human being all over the world that compared to those better versions of the human being, Caliban will, Ferdinand will appear as a Caliban. To most of the man, Ferdinand is Caliban, and they to him are angels, और वो लोग angel है compared to ये Ferdinand. Miranda is saying my affections are most humble, sir. Ferdinand बोल रही, देखिए सर हमको मेरा मतलब उम्मीद और एक्सपेक्टेशन बहुत छोटा है. And I have no ambitions to see a better man. Miranda बोली, और हमको इससे अच्छा बेटर आदमी चाहिए भी नहीं. I don't want to see a better man. Prospero to Ferdinand. Obey. Prospero is saying to Ferdinand, चलो. Their nerves are in infancy again. Prospero is saying कि इसका जो मतलब muscles है, power है, वो बच्चे जैसा हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता because of magic. Prospero with the help of his magic has made Ferdinand very weak. You have no vigor in them. मतलब तुम्हारा कोई अब ताकत नहीं है. Ferdinand. So they are, my spirits are as if in a dream. Ferdinand बोल रहा, हमको ऐसा लग रहा है कि हम कोई सपने में हैं. They are all bound up. मतलब my spirits are, my power is all controlled. My father's loss, the weakness I feel, बोला मेरे पापा मर गए, ship छूट गया, and all these they have wrecked up all my friends. मतलब मेरे दोस्त चले गए, ये सब हमको बहुत कमजोर कर दिया. और इस आदमी का threat, to whom I am subdued, to whom I am controlled, but are light to me. Might I but through the prison once a day can see this made. So he's saying कि मेरे पापा का डेथ, फ्रेंड्स लोग का सेपरेशन, शिफ्ट का रेकिंग, इस आदमी प्रॉस्पेरो का धमकी, सब कुछ हम सह लेंगे, सबड्यूट कंट्रोल एक्सेप्ट कर लेंगे. इफ through the prison, if I can see this beautiful girl Miranda, behold when I see this girl, all the corners of the earth take liberty, make use. Space enough if I am in prison. So this line means if the whole world is given to everybody, even if I have a small space in my prison, and if I can see Miranda from the prison, this is the whole world for me. मतलब prison के कोने में भी अगर हमको मिरांडा दिख जाए ना, तो मेरे लिए पूरा दुनिया है. मतलब let liberty, मैंने freedom take use of the whole world, मतलब दुनिया को पूरा दुनिया ले दो, लेकिन हमको एक
जेल के कोने में मिरांडा भी दिखे ना तो मेरे लिए पूरा दुनिया बावला हो गया. Fallen in love, and when people fall in love, at least in the initial stage, they say all these things. And Ferdinand being no different, so he says this whole world take liberty use of it, make the whole world take the space they want. If I have space enough in my prison to see this girl, that is the whole world for me. Prospero aside. It works on. Prospero बोल रहा है तो प्यार मोहब्बत जैसा हम चाहते थे हो रहा है. Well done Ariel. बहुत अच्छा है. Thank you. Then he's saying to Ferdinand, follow me, follow me, follow me. So again he's saying to Miranda and Ferdinand, Miranda is saying to Ferdinand, Miranda अपने would be boyfriend को बोल रही है कि be comfortable. My father is of a better nature. मेरे पापा बहुत अच्छे व्यवहार के हैं. He appears cruel but he is not. It is untoward that comes from him. Miranda is saying मेरे पापा इतने rude नहीं है. बहुत weird है कि मेरे पापा इतने abnormal behave करे, इतना rude और rough. Is very kind. Prospero to Ariel. Thou shall be free as a mountain wind. Prospero is saying to Ariel कि Ariel थोड़ा देर बाद तुम एकदम free हो जाओ. Then exactly do all points of my command. Prospero is saying फिर जो हम बोल रहे थे वो करना फिर हम तुमको free कर देंगे. Ariel is saying to every syllable, every point I will follow what you will say. Prospero to Ferdinand. Come. To Miranda, speak not for him, speak not for him. So this scene ends at the point where Prospero is taking Ferdinand into the cave and Miranda is trying to save him from the punishment. So this is the end of Act 1, Scene 2. So if you have understood this and if you have got any benefit of it, so please like the video, share it with your friends. And if you have any comment, please write in the comment section. Thank you for watching the video.